इसके बावजूद भी हमने एक रास्ता दिया कि आप जो है जितने फॉरेन के एसेट हैं, जितने बाहर आप पैसा यहां से लेके गए हो, आप उसको डिस्क्लोज करो। उसमें कई एक लोगों ने डिस्क्लोज किए, कई एक लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किए। किसी का पनामा पेपर में आया, किसी का भंडारा पेपर में नाम आया, उसका तो केस अलग से चल रहा है सर, क्योंकि ये सरकार ऐसी है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन इस बजट में जो छोटे लोग जिनका 1 करोड़ से नीचे, यदि मान लीजिए कि कोई फॉरेन एसेट है और उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, उसको भी एक एमनेस्टी स्कीम में जो लोग हैं उनको कोई टैक्स वाले परेशान नहीं करें। आपको अभी भी मौका हम दे रहे हैं, आप आइए, डिस्क्लोज करिए, इसको ले जाइए। क्या इसके लिए आप बधाई का पात्र नहीं बनाएंगे? क्योंकि बड़े लोगों के खिलाफ हमारी सरकार है। यदि आप टैक्स जो है चोरी करके देश के बाहर जाओगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यदि कोई छोटे लोग हैं, उन छोटे लोगों के लिए ये बड़ा काम इन्होंने किया सर। इसके बाद सर जो कॉर्पोरेट टैक्स है, अब क्या है कि विकसित भारत 2047 बनना है। हम ये कह रहे हैं कि 2047 में हम पहले या दूसरे नंबर की इकोनॉमी होंगे, क्योंकि जर्मनी तो 5 ट्रिलियन पर है, हम 4.53 पर हैं, तो मुझे लगता है कि 2027 में हम तीसरी इकोनॉमी हो जाएंगे। हमारा जो मुकाबला है वो चाइना के साथ है, जो अभी लगभग 20 ट्रिलियन के आसपास है, और उसके बाद अमेरिका जो है 30 ट्रिलियन के आसपास है। हम एक टारगेट बनाए हुए हैं कि 2047 में हम लगभग 40 से 50 ट्रिलियन तक पहुंचे, नंबर 1 नंबर 2 की स्थिति में पहुंचे। इसमें जो मेक इन इंडिया का एक नारा है कि हम यहां के प्रोडक्शन बनाएंगे, यहां के लोगों को रोजगार देंगे, यहां का डेवलपमेंट करेंगे, उसमें जो विदेश के लोग आएंगे या अपने लोग जो इन्वेस्ट करेंगे, उनका मुकाबला एशिया में किससे है सर? चाइना जो है, चाइना में हम सुनते हैं कि बड़ी R&D हो रही है, बड़े उद्योग धंधे आ रहे हैं। वैसे चाइना से भी माननीय वित्त मंत्री जी कई एक चीजें खींच कर लेकर आ गई हैं, जैसे कि मोटर के प्रोडक्शन। अब FTA जो हमने साइन किया है सर, उसमें मोटर का प्रोडक्शन हमारे यहाँ होगा। हम यहाँ मोबाइल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो गए हैं। लेकिन हमारा मुकाबला किससे है? चाइना में टैक्स है या नहीं है, दुनिया में कोई नहीं जानता सर। सिंगापुर जो एक देश है, वहां टैक्स मुश्किल से 15 से 16%, 17% है। दुबई जो है, कई एक जगह टैक्स है, इनकम टैक्स है, कई एक जगह कॉर्पोरेट टैक्स है, टैक्स नहीं भी है, मतलब 7-8% के आसपास है। यदि अपने को इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम क्या होगा कि जो बिजनेसमैन है उनको एक ऐसा साधन दे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक सरकार हमने देखी सर 2011 में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया, कि वोडाफोन एसआर का जो है टैक्स का रिटर्न का बात आने लगा, तो इसी पार्लियामेंट में, चूंकि उस पार्लियामेंट का मैं सदस्य था सर, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लेके आ गए। पूरी दुनिया में कहीं भी पीछे से टैक्स नहीं लगता है सर। इसीलिए कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टर को यह पता होता है कि हम जो काम करने वाले हैं या अपना पैसा लगाने वाले हैं उसमें क्या टैक्स मिलेगा। इन्होंने जो है 2011 में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लेकर आ गए, जिसके कारण पूरी दुनिया में 2G हो गया, 3G हो गया, कोलगेट हो गया, इतने स्कैम हो गए। उसके बाद इस तरह का जो गब्बर सिंह टैक्स आ गया सर, इस टैक्स ने ऐसी हालत कर दी कि बाहर के लोग हमारे यहां इन्वेस्ट करने से मना कर दिए। जब हमारी सरकार आई तो माननीय मोदी जी ने एक आश्वासन दिया कि हम जो आज आपको टैक्स दे रहे हैं, कोई रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं होगा, जो भी टैक्स होगा वो प्रोस्पेक्टिव टैक्स होगा। और कॉर्पोरेट के लिए आपको ध्यान हो कि 2016-17 का यदि बजट आप ध्यान देंगे तो हमने जो है कॉर्पोरेट टैक्स को जो है 27-28% पर ला दिया, क्योंकि हमको कंपीट एशियन कंट्री से करना है और उसमें आगे बढ़ाना है। इसमें टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट कॉर्पोरेट टैक्स में सर, और जो ट्रांसफर प्राइसिंग है, जो दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट आएंगे, इसका जो है डेट और जो लिमिटेशन है, ये दोनों हमने बदला। और इसके कारण विकसित भारत 2047 में हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को है बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना बड़ा काम किया। और इसमें तीसरी जो है सेफ हार्बर टैक्स और चौथा एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ये दोनों चीजों के ऊपर जो है ये पूरे के पूरे फाइनेंस बिल में वित्त मंत्री जी ने है टैक्स को बहुत राहत दी है सर। इसके बाद एक मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स है, जिसको कि टैक्स घटाया है सर, 18% था उसको 14% लेके आए। अब मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स ये था सर कि कई एक इंडस्ट्री ऐसी थी जिसको कि माननीय राजीव गांधी जी टाइट करना चाहते थे। उनको लगता था कि ये पैसा कमा रहा है,
कांग्रेस पार्टी को पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देश में पैसा नहीं दे रहा है, टैक्स नहीं दे रहा है। तो 87 में ये जानने का सवाल है, मतलब इतिहास समझिए कि मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स कब आया। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स ये है कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन आपको मिनिमम इतना टैक्स भारत सरकार को देना पड़ेगा। ये मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स का सीधा सीधा छोटा सा मतलब है। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स सर 1987 में इसी पार्लियामेंट ने पास किया। उसके बाद सारे कॉरपोरेट के साथ जो है इनकी बातचीत हो गई, और वो जब तक कि 89 तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे सर, वो केवल जिसको कहते हैं ना कि वो दिखा दिया आपको शेर खाएगा, शेर खाएगा, शेर खाएगा बकरी का, उसी तरह से कांग्रेस दिखाती रही और जितना चंदा है वो चंदा लेती रही सर। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स लागू ही नहीं हुआ। और मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जब बाद में लागू हुआ, उसका ये हुआ जब माननीय अटल जी आए, तो अटल जी ने एक बड़ी अच्छी पॉलिसी बनाई कि चाइना कैसे डेवलप हो। चाइना को डेवलप करने के लिए या यूएस को डेवलप करने के लिए क्या क्या चीजें हुई, तो 3 चीजें थी सर कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बनाया और डोमेस्टिक टैरिफ यूनिट बना। 3 चीजें जो है कंपनियां बनती हैं, डीटीए, ईओयू और एसीजेड सर। एसीजेड जब खूब फुल फ्लेज्ड बढ़ने लगा 2004 तक, उसके बाद हमारी सरकार हट गई सर। एसीजेड पर विशेष तौर पर माननीय चिदम्बरम जी ने मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स लगा दिया। इसके कारण आप समझिए कि पूरा का पूरा जो एसीजेड का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। और इस मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स के कारण हम बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे। इस पर रेशनलाइजेशन ऑफ मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स इतने वर्षों के बाद माननीय वित्त मंत्री जी लेकर आई हैं, इसके लिए क्या हम बधाई नहीं देंगे? क्या 2047 विकसित भारत बनाने के लिए यदि हम कॉर्पोरेट को आगे बढ़ाने के लिए, रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए, किसी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, कंपनियां जब तक नहीं आएंगी, जब तक हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तब तक हम रोजगार कैसे देंगे, टैक्स कैसे देंगे, लोगों का विकास कैसे होगा? आज सारे सांसद जो है सीएसआर के बारे में चर्चा करते रहे सर। सीएसआर कांग्रेस लेकर नहीं आई 2013 में, सीएसआर हमारी कमेटी लेकर आई। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के यशवंत सिन्हा थे, मैं उसका मेंबर था। शिव कुमार उदासी हमारे दोस्त यहाँ नहीं है, भरतरी महताब साहब थे। हम लोगों ने, गुरदास दासगुप्ता सीपीआई के थे सर, वो अब नहीं है। हम चारों ने जो है मिलकर एक प्रेशर बनाया कि सीएसआर, क्योंकि हम जिस इलाके से आते हैं, कोयला हमारे यहाँ से आप ले जाते हो, पावर प्लांट हमारे यहाँ से दूसरे जगह बनता है, और हम केवल जो है धूल और मिट्टी खाते हैं। हमारे क्षेत्र का कैसे विकास होगा? सीएसआर का पूरा पॉलिसी जो है वो हमारी कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ने बनाई सर। किसी सरकार को कुछ नहीं जाता है, और उस सीएसआर की पॉलिसी को कितना बढ़िया ढंग से इंप्लीमेंट करना है वो हमारी मोदी जी की सरकार कर रही है, और वो बधाई के पात्र है। और उसके लिए जो है सर ये मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, सीएसआर, इन सबों के लिए हम उनको बधाई देते हैं। इसके बाद सर इस बार जिस दिन बजट आया उस दिन क्या हुआ कि शेयर मार्केट जो है वो प्राइस धड़ाम से गिरने लगा। कई एक लोगों को लगा कि बजट अच्छा है, बजट खराब है। मैं बाहर निकला सर और मैंने कहा कि कुछ नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी ने एक बड़ा रैशनल जो है, जिसको कहते हैं कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है क्या सर? शेयर मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, नीचे बढ़ रहा है, किसका पैसा है, किसका नहीं पैसा है, किसी तरह का जो है आप समझिए कि कोई लीगल फ्रेमवर्क है, लेकिन लीगल फ्रेमवर्क में कोई बहुत ज्यादा दबाव नहीं। हमारी सरकार का एक बड़ा विषय है जो लगातार वित्त मंत्री जी कर रही है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कि लोगों को जेल नहीं जाना पड़े, और जेल नहीं जाना पड़े तो जो इकोनॉमिक ऑफेंडर हैं उनको, या जो इकोनॉमिक चोरी करना चाहते हैं उनको हम सही रास्ते पर लेकर जाए। तो ये इस बार क्या है कि इस बार में कैपिटल गेन्स, जो बायबैक टैक्स है और जो एसटीटी है, उसको जो है माननीय वित्त मंत्री जी ने बढ़ाया, जिससे कि शेयर मार्केट में जो गरीबों का पैसा, जो लगातार गरीब, कभी शेयर मार्केट बढ़ गया तो बढ़ गया, उसमें बेचारे पैसा लगाए और नीचे चले जाते हैं, धड़ाम से चले जाते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए एसटीटी टैक्स लगाया है। इसके कारण शेयर मार्केट में उस दिन ऊपर नीचे हुआ, और बाद में आपको ध्यान हो कि दूसरे दिन जब लोगों को समझ में आया, आम इन्वेस्टर को, कि हमको प्रोटेक्ट करने के लिए मोदी जी की सरकार ये लेकर आई है, तो ये आपको पता है कि शेयर मार्केट बढ़ गया। इसके लिए इस फाइनेंस बिल में जो लेकर आए हैं उसके लिए निश्चित तौर पर हमारी सरकार जो है वो वाहवाही की पात्र है सर।
इसके बाद जो एक नया सिस्टम आया है सर, वो चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन है। बाढ़ है चैरिटेबल ट्रस्ट का, स्कूल चैरिटेबल ट्रस्ट में, हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट में, कॉलेज चैरिटेबल ट्रस्ट में। तो चैरिटेबल ट्रस्ट जो है उसमें जो वायलेशन है सर, उस वायलेशन को देखने के लिए हमारी सरकार जब से आई 2000, इस पर एक जब सरकार थी यूपीए की, तो सीएजी की एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई। सीएजी की रिपोर्ट ने यह कहा कि जो मैक्सिमम बड़े कॉरपोरेट हैं किस तरह से चोरी कर रहे हैं, और उस चोरी के कारण कई एक कॉरपोरेट, ऐसे बड़े कॉरपोरेट थे सर जिन्होंने कि आरबीआई का रूल्स वायलेट करके 4000 5000 करोड़, कोई येल यूनिवर्सिटी को दे रहा है, कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को दे रहा है, कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दे रहा है, और जो ब्यूरोक्रेट के बच्चे हैं, जो पॉलिटिशियन के बच्चे हैं, वो कैसे एडमिशन लेंगे, उसके लिए सीट रिजर्व करने की बात थी। ऐसे ही जो है लाइजनिंग चल रहा था। हमारी सरकार ने चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए 2016-17 के बाद धीरे धीरे जो है एक अच्छा परिवर्तन किया, बड़ा कानून लाया, और उसको कैसे हम और स्ट्रीमलाइन करेंगे, इस फाइनेंस बिल में जो है वो वित्त मंत्री जो है उसको लेकर आई है। इसके बाद जो अमेंडमेंट है सर, वो टीडीएस का। टीडीएस क्या है कि जब से टीडीएस लागू हुआ और जब से माननीय वित्त मंत्री जी टीडीएस कर रही है, अच्छे कर रही हैं, इसमें मैं आपको बताऊं कि जैसे एक टीडीएस जो है करंट रेट 5% का था तेंदुपत्ता पर, उसको 2% पर लेकर आई। हम बिल लेकर आए, हम ये सोचते हैं कि आदिवासियों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, उनको रोजगार दें, या जो वन क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो जो तेंदुपत्ता जिसे कि बीड़ी बनती है वो जब लेकर आते हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा हम पैसा दें, ट्रांसपेरेंट तरीके से दें, और उसमें ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो। इस कारण से जो है उन आदिवासियों को राहत देने के लिए, गरीबों को राहत देने के लिए हम जो है उस तेंदुपत्ता के इसको 2% पर लेकर आए। अभी जो एक नया बिजनेस है सर स्क्रैप का, कोई भी चीज होगा हम स्क्रैप बेच रहे हैं, बाढ़ आ गई है, उसका कोई कंट्रोल सिस्टम जो है धीरे धीरे माननीय वित्त मंत्री जी को लगा, तो स्क्रैप पर जो करंट रेट 1% था उसको हमने 2% पर बढ़ाया सर। इसके अलावा आपको पता है कि हम प्राइवेटाइजेशन पर गए, हम कमर्शियल माइनिंग की तरफ जा रहे हैं। तो जो मिनरल्स, कोल, लिग्नाइट, आयरन ओर, ये सब का जो एक बड़ा है, और मैं जिस राज्य से आता हूं सर, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद माननीय वित्त मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह भी करूंगा कि ये जो रॉयल्टी सेस का मामला जो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को छोड़ दिया है, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे झारखंड जैसे राज्य में, अभी तो उड़ीसा में लागू नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में लागू नहीं हुआ क्योंकि हमारी सरकार है, लेकिन झारखंड में यह लागू कर दिया। तो झारखंड में लागू करने से क्या होगा कि जो अभी जैसे एनर्जी सिक्योरिटी में अपने को दिखाई दिया कि अल्टीमेटली कोयला जो है वही बचाव का साधन। यदि पावर, जैसे अभी गर्मी का दिन है और यूएस ने और चाइना ने दोनों ने जो है जो एनवायरनमेंट के जो विषय थे उसको जो है जो जीरो एमिशन का जो 2070 का टारगेट था, आपको पता है कि ट्रंप साहब ने आकर उसको सबसे पहले कह दिया कि ये केवल यूरोपियन कुछ कंट्रीज का जो है ये धता है और ये अपने को कमजोर करता है। उसमें मैं आपको बताऊं कि इस सुप्रीम कोर्ट के इस टैक्स के कारण सबसे ज्यादा यदि कहीं नुकसान होगा तो हमारे यहां होगा, क्योंकि 450 रुपया पर टन उन्होंने टैक्स लगा दिया है, क्योंकि उनको पैसा देने के लिए कुछ नहीं है। और दूसरा जो हो रहा है सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को कहूंगा, दूसरी जो बातें हो रही हैं कि मान लीजिए कि आप व्हाइट में जो है प्रॉपर ढंग से टैक्स देकर एक ट्रक ले जाओ और 3 ट्रक जो है आप चोरी करके ले जाओ। ये जो मामला है इसमें जो आप लेकर आ रहे हैं, ये टीसीएस का जो आप कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं कि 1% को 2% से बढ़ाया है, इसके साथ साथ मेरा आपसे आग्रह होगा कि सुप्रीम कोर्ट में अपने को एक रिव्यू पिटीशन दाखिल करना चाहिए, जिसके कारण कि झारखंड जैसा राज्य जहां की 40% माइंस और मिनरल्स है इस देश का, वो उसका जो है राहत हो पाए और हम लोगों को बचा पाए। नहीं तो केवल और केवल माफियागिरी, ये कांग्रेस जहां भी शासन करने के लिए जाती है सर, केवल माफियागिरी के अलावा कोई काम नहीं है, उसको हम किस तरह से रोक पाएंगे। मैं ये आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप जो है इसको कुछ ना कुछ प्रॉपर करें। इसमें फिर जो पेनल्टी प्रोविजन है, मतलब समाधान से समस्या से समाधान तक, विश्वास से विवाद तक, इसमें
बहुत बड़ा काम किया है भारत सरकार। भारत सरकार ने वर्षों में, और माननीय वित्त मंत्री जी ने इसको बड़े अच्छे ढंग से लिया। आपको आश्चर्य होगा सर, सीएजी की कितनी रिपोर्ट आएगी। 5,000 का केस है, 10,000 का केस है, 20,000 का केस है। वो केस 30 साल से चल रहा है, 40 साल से चल रहा है। 5,000 रुपया लेने के लिए भारत सरकार कम से कम 5 लाख 10 लाख रुपया वकीलों के पीछे खर्चा कर चुकी है। 20 साल 25 साल से केस चल रहा है, वकीलों को कोई मतलब नहीं है। तो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि आप जो है एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के बाद जो है आपको जो समस्या है उसका समाधान कर लीजिए, जो विवाद है, चाहे वो इनकम टैक्स का हो चाहे कस्टम एक्साइज का हो। उसी में पेनल्टी प्रोविजन को भी नॉर्मलाइज करने के लिए इनकम टैक्स में इस बार फाइनेंस बिल में जो है एक्ट में CIT IT में जो है एक बड़ा परिवर्तन हमारी सरकार लेकर आई है सर। प्रोसिक्यूशन का जो रेशनलाइजेशन है, जो प्रोसीडिंग्स होता है, उसमें जो प्रोसिक्यूशन, मैंने जैसे आपको कहा कि भारत सरकार एक बड़े अच्छे दिमाग के साथ चल रही है कि यदि अपने को विकास करना है तो निश्चित तौर पर अपने को जेल से मुक्ति देके इकोनॉमिक ऑफेंडर जो है उनको इकोनॉमिक पेनल्टी लगाएगी, जिसके कारण कि भारत के किटी में पैसा आ जाए। नहीं तो आप देख रहे हैं कि सभी भाग जा रहे हैं सर। उस कारण से एक बड़ा काम जो है ये रेशनलाइजेशन का जो है आया है। इसके बाद मैं GST के लिए वित्त मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का दोबारा आभार करना चाहता हूं कि GST जिस लिए बनी थी, GST को 2 टैक्स रेट में लाना, और इसके लिए जो एक नया बात हुआ सर, कई एक लोगों को लगा कि हमारा जो रेवेन्यू है वो घट जाएगा, लेकिन वित्त मंत्री जी प्रधानमंत्री जी के साथ उनको पता था कि यदि हम टैक्स कम करेंगे, आम लोगों के जीवन में यदि हम सुख और सुविधा लाएंगे, तो भारत का जो आम आवाज है, जो गांव गरीब और किसान के लोग हैं, वो देश के किटी में पैसा देंगे। और आज 15% हमने कंसेशन दिया टोटल जो है GST में, और आपको आश्चर्य होगा कि 8% GST का टैक्स बढ़ा है। 8% GST का टैक्स बढ़ा है सर। इससे बड़ा काम जो है भारत की जनता नहीं कर सकती थी, और इससे बड़ा काम जो है भारत सरकार नहीं कर सकती थी। GST रिफंड का सवाल हो, इनकम टैक्स रिफंड का सवाल हो, वो इतना आसानी से स्मूथ होता है, पता ही नहीं चलता है कि कब पैसा हमने दिया और कब पैसा वापस आ गया। नहीं तो पहले के सरकार में, कांग्रेस के सरकार में ये होता था सर कि जब 31 मार्च पूरा होने लगता था तो सारे कॉर्पोरेट को बुलाकर कहते थे कि टैक्स दो, क्योंकि उनको बजट में बताना होता था कि हमने इस साल टैक्स कलेक्ट किया, और उसके ऊपर फिर बाद में सर टैक्स रिटर्न करने के लिए साल 2 साल तो लगाते ही थे। साल 2 साल लगाने में कोई समस्या नहीं थी सर, उसको 6%, 7%, 8% टैक्स जो है जोड़ कर देते थे। ये काम जो है माननीय वित्त मंत्री जी ने खत्म किया, और इसमें भी एक बड़ा काम हो गया। इसके बाद सर कि ईज ऑफ लिविंग में पर्सनल इंपोर्ट जो था, जो बैगेज रूल था सर, बैगेज रूल कब का बना? जब हम आप विदेश जाते हैं सर, उसमें से कस्टम वाले तंग करते हैं कि आप इतने का ला सकते हो, इतने का नहीं ला सकते हो। ये बैगेज रूल मुझे लगता है कि आज से 15-17 साल पहले का जो है बैगेज रूल बना हुआ था। अब ज़्यादा लोग जो है उनको पैसा हो गया, ज़्यादा लोग विदेश जाने चाहते हैं, तो उन्होंने जो है एक बैगेज रूल 2026 इसमें चेंज किया सर। इसमें ऑटोमेटिक गुड रजिस्ट्रेशन का जो है एक बड़ा काम किया। क्रिटिकल मिनरल, मैं बस 2-4-5 मिनट में ख़त्म करूँगा स्पीकर महोदय। कैपिटल गुड्स, मशीनरी, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, जो उद्योग धंधे के लिए जो सामान आएंगे, उसमें बिजनेसमैन को हम क्या फ़ायदा दें, क्योंकि इसके पहले जो है इनका जो है टैक्स रिबेट का एक बड़ा काम चलता था सर। मैं आपको बताऊं, प्रत्येक साल एक बड़ा कागज आता था जिसमें यह होता था कि इस साल भारत सरकार ने कितना टैक्स रिबेट दिया, और कोई ऐसा साल है, कॉर्पोरेट की बात करते हैं सर, कांग्रेस ने कोई ऐसा साल नहीं था 2004 से लेकर 2014 तक कि जब बड़े बिजनेसमैन को 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, 7 लाख करोड़ का टैक्स रिबेट नहीं दिया सर। हमने जो है उसको पूरा प्रॉपर जो है स्ट्रीमलाइन कर दिया, और आज जो है यदि हम टैक्स रिबेट दे रहे हैं तो जो साधारण लोग, जो गांव गरीब के लोग हैं, जो मकान खरीद रहे हैं, उनको टैक्स रिबेट दे रहे हैं। जो इनकम टैक्स के लोग हैं, जो इनकम टैक्स छोटा पे करते हैं, उनको हम टैक्स दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स और कंज्यूमर में जो है ड्यूटी फ्री, इसमें कई एक माइक्रोवेव ओवन और डिपन लोकल इलेक्ट्रॉनिक्स का दिया सर। ITA 1 इन्होंने 96-97 में
साइन कर लिया। इनको पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट कितना बढ़ रहा है सर। सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स थे, चाहे वो सॉफ्टवेयर थे चाहे हार्डवेयर थे, सारी की सारी इंडस्ट्री बंद हो गई सर। ITA 2 माननीय मोदी जी ने 2015 से रोक रखा है। हमने साइन नहीं किया है कि हमने ये कहा है कि चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे और हम किसी देश के आगे नहीं झुकेंगे। और इसके लिए आज हम बड़ा काम कर पा रहे हैं सर। आज हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर हो रहे हैं और जिस तरह से PLI स्कीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग तक में चल रहा है, जिस तरह से वित्त मंत्री पैसा दे रहे हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं। मैं इतना ही कहूंगा सर कि आपदा मापतंती नांग हितो अप्यायाति हेतुताम मातृजंगा ही वत्सस्य अस्तम भवति बंधने। ये हमारा वेद कहता है सर। आज पूरी दुनिया कोरोना के बाद करा रही है, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ रहा है। आज हमारी इकोनॉमी 7% के GDP ग्रोथ से बढ़ रही है। इसमें माननीय वित्त मंत्री जी का बड़ा योगदान है। हम सभी इस फाइनेंस बिल को पास करें, देश को मजबूत करें, वित्त मंत्री के हाथ को मजबूत करें और जो 2047 भारत का सपना है विकसित भारत का, उसको जो है हम लागू करें। आपने मुझे मौका दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। माननीय श्री रमाशंकर राजभर जी। 2009 से माना जाएगा कि आभारी हूँ सभापति महोदय। आपका, अपने संसदीय क्षेत्र सलेमपुर लोकसभा की जनता का और उत्तर प्रदेश के गरीबों ने 27 में जिनको सरकार देने का मन बनाया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का। महोदय, वित्त मंत्री जी ने संशोधन लेकर आया है, अच्छा ही। मैं दो एक सवाल करना चाहता हूं महोदय, क्योंकि मैं जानता हूं मैं अपना समय कितना है। जब हम इस सदन में होते हैं महोदय, तो सब चंगा दिखता है। लगता है कि इस सदन में हम बैठे हैं, ना गरीब की कोई समस्या है, न किसान की कोई समस्या है, न छात्र की कोई समस्या है, न महिलाओं की कोई समस्या है, न मजदूर की समस्या है। लेकिन जब हम गांव में जाते हैं, जमीन पर जाते हैं, तो समस्या ही समस्या दिखती है। महोदय, इस धरती का होने वाला सारा कठिन काम, एक बड़ा वर्ग है गरीबों का, जो पूरे खानदान के साथ कई पुश्तों से करता आ रहा, लेकिन उसको आज मिला क्या? गर्मी आए तो घर जलने से मरे, बरसात आए तो घर ढहने से मरे, जाड़ा आए तो कंबल के बिना ठिठुर के मरे, बेटी जवान हो जाए शादी का पैसा नहीं, और बेटा बीमार हो जाए दवाई का पैसा नहीं। ये हमारे बजट के इंतजाम। मैं संशोधन में प्रस्ताव करता हूं, संशोधन आप लाई हैं, होंगे, लेकिन अगर GDP बढ़ रही है तो आखिर युवा बेरोजगार क्यों हो रहा है? सारी नौकरियां आउटसोर्सिंग की बाढ़ आ गई। आउटसोर्सिंग की ऐसी बाढ़ आई है कि कोई भी डिपार्टमेंट देश का हो आपसे बजट ले रहा, और सरकारी नौकरी में छटनी हो रही। आउटसोर्सिंग की नौकरियां दी जा रही हैं, प्रोवाइड कराने वाली, सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनियां और ठेकेदार आ गए। वो SC का आरक्षण, ST का आरक्षण, OBC का आरक्षण, EW का आरक्षण लूट रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। महोदय, अगर विकास हो रहा है तो आखिर पलायन क्यों हो रहा है? चाहे वो बिहार हो, हमारा पूर्वांचल हो, सलेमपुर हो, बलिया हो, देवरिया हो, कुशीनगर हो, गोरखपुर हो, आजमगढ़ हो, बलिया हो, झारखंड हो, आखिर पलायन क्यों हो रहा है? ये सवाल है। युवाओं में बेरोजगारी दर कई आकलनों में 15% से अधिक बताई गई। लाखों सरकारी पद खाली हैं, नहीं भरे जा रहे हैं। सरकार करे, कोई कैलेंडर बनाए कि अब तक SC का आरक्षण कोटा क्यों नहीं पूरा हुआ, अब तक ST, OBC, EW का आरक्षण क्यों नहीं पूरा हुआ, तब बजट दे। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि डीजल महंगा, खाद महंगी, सिंचाई महंगी,
और मैं एक चीज आपके संज्ञान में डाल देता हूं, सारे मंत्री यहां बैठे हैं, सरकार के मंत्री बैठे हैं। जो एलपीजी गैस का प्रॉब्लम आया, एक तुगल की फरमान सरकार ने कर दिया कि 15 किलोमीटर एरिया में अगर शहरी उपभोक्ता है गैस का, तो वो 25 दिन में सिलेंडर पाएगा, और 15 किलोमीटर के एरिया में अगर ग्रामीण वितरक है एजेंसी वाला, तो वो 45 दिन में सिलेंडर आया। क्या आपने पहले दिन से और 25 दिन शहरी उपभोक्ता को सिलेंडर दे दिए थे क्या? उसका तो आज खत्म हो गया, अब तो पाएगा 25 दिन बाद। यह भेद क्यों? मारा मारी गांव में हो रही है, एजेंसी में और उपभोक्ता में। कह दिया आपने, पॉलिसी बना दिया, तो गल की फरमान पेट्रोल कर दिया गया कि अब हम ऑनलाइन ही बुकिंग करेंगे। तो बुकिंग तो मोबाइल के तमाम ऐप है, किसी भी ऐप से बुकिंग हो जाएगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, वो टीपी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी से आएगी। गांव में कहां है? हो सकता है टावर ना हो सकता है मोबाइल में पैसा ना हो गरीब के। बनते रहेंगे और जन विरोधी होते रहेंगे। महोदय, बजट का आकार तो बड़ा है, लेकिन कल्याण के लिए सीमित गुंजाइश है। 2026-27 के लिए यूनियन फाइनेंस बिल में सरकार ने 44 लाख करोड़ से अधिक राजस्व संग्रह का अनुमान रखा है, जो पिछले वर्ष से लगभग 10% अधिक है। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी उधर के ट्रेजरी बेंच के एक वक्ता बता रहे थे, सीएसआर का बखान कर रहे थे 2013 में लाए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 2010 में आज 15 बरस हो गया। इतिहास बनाने का माननीय वित्त मंत्री जी, कभी कभी अवसर मिलता है। अपने वित्त मंत्री काल में 15 बरस हो गया, 1 लाख पाई सांसद निधि नहीं बढ़ी, और नहीं तो जीएसटी लेकर आपने 1 करोड़ रुपया उसमें से और कम कर दिया, 4 करोड़ हो गया। ये एक इतिहास बना दीजिए, करिए सांसद निधि का। महोदय, सरकार कुल कर्ज अभी भी जीडीपी के करीब 55% पर बना हुआ है। इसका एक बड़ा कारण है कि ब्याज भुगतान ही कुल खर्च का लगभग 26% है, और कुल राजस्व का करीब 40% खा जाता है। यानी बजट का बड़ा हिस्सा पुराना कर्ज निपटाने में खर्च हो रहा है, पुराना कर्ज निपटाने में। इसका परिणाम साफ है, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और फिस्कल अनुशासन को प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र बना हुआ है। क्योंकि आपकी घंटी बज गई है, इसलिए मैं अपनी बात एक शेर के साथ बंद करता हूं कि छेड़ने से मूक भी बाचाल हो जाता है। क्या बात है महोदय, छेड़ने से मूक भी बाचाल हो जाता है, टूटने से शीशा भी काल हो जाता है। देश के गरीबों को इतना न सताओ लोगों, जलने से कोयला भी लाल हो जाता है। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रोफेसर सौगत राय जी। Sir, I rise to speak on the finance bill. This was part of the budget which was presented by the finance minister on 1st February. It's 1.5 months since then. Let us see what the budget means, what it is for.
May I say basically that this budget is part of Atal Tinkering Lab. The finance minister has tinkered with budgetary movements, and I'll give you examples as to what she has actually done. There are no serious changes in tax structure, only tinkering. Some IT returns, timelines pushed, forms simplified, change in forms, and then tax penalties. Prosecution rules have been eased. Again, the foreign firms sourcing services from Indian entities to get 15% safe harbor margin of cost, among other benefits. Sir, capital gains tax, exemption on sovereign gold bonds only when held from issuance to आस्था के महापर्व छठ पूजा के शुभ अवसर पर मां बरारी कोई घाट के समीप छठ व्रतियों के बीच छठ पूजन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें capital gains. Retail investors may benefit a little. One-time disclosure tax scheme for NRIs. Tax revenue to GDP ratio for FY27 lowest in 6 years. It's a good thing. Sir, the income tax department is saying that there will be new income tax law effective from April 1. He went to the Parliamentary Standing Committee, and again decriminalization and compliance, corruption. Central Board of Direct Taxes say that will decriminalize. Earlier they used to put everybody in jail, now they are saying that we are going for decriminalization. To whom? To the corporates. They will have a better. Sir, one person has said, one economist has said the budget has delivered a googly, the retrospective tax. Now, besides being greedy and unfair, retrospective taxes should be illegal. Nothing is gained and much is lost in terms of investor confidence via this new tax. This will net only about 200 crores a year. There will be a new tax on capital gains made by the purchase of sovereign gold bonds. So retrospective effect, as they say, is criminal. Now the main thing is, in our country, taxes are like this: 1/3 personal income tax, 1/3 corporate tax, and 1/3 GST collections. Now let us see how we have done
with regard to this. The inequality in the country is emphasized and raises question about financial health of India's corporate sector. One catch is that agriculture is still exempt from taxation. So half of Indians do not contribute anything to national overheads. Having said that, let me look at, sir, what the condition of the economy is. Rupee dollar is 93 rupees per dollar. You know the condition of petroleum. The Prime Minister gave a long statement on how much petroleum reserves we have got, that nothing to worry. Every day, the possibility of energy prices rising is hanging on the people. Now, having said that, let me put it this way. What are the main criticisms of this tax? The bill focuses mainly on incremental or micro reforms rather than bold transformative changes. It is a continuity-based approach without significant policy innovation, tinkering, as I said. Unlike previous years, there is no major tax relief or incentives for the middle class, no relief. This has led to concerns about reduced disposable income and consumption demand. Emphasis on fiscal consolidation may restrict government spending on welfare and social sectors. It is happening. On education, on health, expenditure is going down. Critics argue that balancing deficit reduction with a growth remains challenging. The states have raised concern about limited tax devolution and increased reliance on cesses and surcharges, which are not shared. That main thing, government imposes cesses and surcharges, which are not a part of the divisible pool. This strains cooperative federalism and state finances. Sir, there is uncertainty in tax administration. Provisions related to reassessment and updated returns lack clear timelines, leading to discretionary power for tax officers. This can create uncertainty. Critics note that bill does not adequately address external risks, unemployment, and sectoral distress. That's why there is opposition to this tax. One major objection is the absence of significant tax relief for the middle class. Another is bill's overemphasis on fiscal consolidation, growing use of cesses and surcharge, limited structural reforms, and tax administration provisions are very lax. Sir, this bill, which operationalizes the fiscal proposals, has spread over widespread criticism for opposition parties, etc. You know, the share market fell drastically on 1st February when the finance minister presented her 9th budget. The bill emphasizes fiscal discipline. One of the foremost objections is that it fails to adequately address the pressing economic challenges facing the country. Issues such as unemployment, rural distress, sluggish consumption demand have not been sufficiently tackled. The focus on macroeconomic stability and long-term capital expenditure is seen as coming at the cost of immediate relief measures. Many economists believe that without boosting consumption, especially in rural and lower-income segments, economic growth may remain uneven and fragile. Another significant criticism relates
to the perceived lack of relief for the middle class. Despite expectations of tax concession, bill provides limited direct relief to salaried individuals. Instead, certain measures such as the increased security transaction tax on derivatives are viewed as participation in capital markets and reduce disposable income, thereby impacting consumption. There is a higher compliance burden on taxpayers. Provisions relating to reassessment, updated returns, and disclosure requirements have raised apprehensions about increased scrutiny and administrative complexity. Industry bodies have pointed out the absence of clear timelines and safeguards. This may grant excessive discretionary power to tax authorities, potentially leading to harassment and litigation. Such concerns are particularly relevant for small and medium enterprises, which may lack the resources to deal with complex compliance requirements. Federal concerns form another area of objection. State governments have expressed dissatisfaction over continued reliance on cess and surcharge, which are not shared under divisible pool of taxes. State share in federal taxes remains unchanged. The growing proportion of non-shareable revenues effectively reduces their fiscal pace. This has led to strain on states, especially those with weaker revenue base. How many times do I have to repeat in this House that this government, central government, is depriving West Bengal, depriving it of its dues under the 100 days work or the Prime Minister's Abbas Yojana. We have been deprived. The finance minister will snap back at me, saying we have given this nothing. You have totally deprived West Bengal. Total dues amount to 2 lakh crores, and we shall continue protesting, and we shall show in the elections that people in West Bengal also resent the same. Sir, it has been mentioned that the bill allegedly favors large corporations and high-income groups. One of the major steps taken by the finance minister was giving huge concessions in corporate taxes. She said that that was the way to really improve demand in this country. But all benefits are going to corporate houses. Corporates will not develop India unless the government steps in a big way. Tax incentives, ease of doing business measures, and investment-friendly provisions are seen as disproportionately benefiting big businesses and foreign investors. And if I may mention that this ease of doing business is bogus. Even the World Bank has jettisoned this ease of doing business calculation. It is no longer used. Only the government of India uses ease of doing business. Sir, such policies may exacerbate income inequality and contribute to a concentration of wealth. The absence of strong redistributive measures, such as enhanced social spending or targeted subsidies, has reinforced the perception of inequitable fiscal strategy. So the minister's finance bill is essentially an inequitable fiscal strategy. The limited emphasis on welfare expenditure is a point of contention. The allocations for sectors like health, education, and social protection have not kept pace with rising needs in a developing country with significant socio-economic disparities. The fiscal policy should prioritize human development alongside economic growth. We are falling in the world human development indices, and still the minister has no attention. The bill's focus on capital expenditure, that is another formula that government uses, that we are increasing capital expenditure. Only by increasing capital expenditure, without distributive justice, is unfair.
capital expenditure, a huge project, it takes 10 years to be completed. That will not improve the financial health of the country. So, capital expenditure, while important for infrastructural development, is insufficient to address immediate social challenges. The incremental nature of reforms proposed in the bill is not acceptable. While continuity and stability are important, many experts feel that the bill lacks bold structural reforms needed to transform the economy. Areas such as labor market reforms, agricultural modernization, and judicial efficiency require more decisive action. Absence of such reforms has led to criticism that the bill is cautious rather than visionary. There are also concerns regarding impact of certain tax measures on specific sectors. For instance, higher transaction taxes and tighter compliance norms may adversely affect the financial markets and the fintech ecosystem. Similarly, changes in customs duties and indirect taxes could have implications for manufacturing competitiveness and import costs. Industry stakeholders have urged the government to ensure that tax policies do not inadvertently hinder innovation and growth. Transparency and predictability in tax policy have also been questioned. Frequent changes in tax provision and introduction of new compliance requirements can create uncertainty for business provision, and introduction of new compliance requirements can create uncertainty for business investors. A stable and predictable tax regime is essential for long-term planning and investment decisions. Therefore, this finance bill does not fully meet this expectation. The bill has limited focus on employment generation. While infrastructure investment can create jobs in the long run, very long run, there is a need for targeted measures to address immediate employment concerns, particularly among youth. Absence of specific incentives for labor-intensive sectors has been viewed as a missed opportunity. Look at West Bengal. The state government is giving 1,500 rupees to all the youth as unemployed allowance. You do not announce even one concession for unemployed people. I will request you to study the Lokhir Bhandar in West Bengal, where all women are getting 1,500 rupees. You give nothing, being a woman yourself. In conclusion, Kindly address the the chair. objections to the finance bill, sir, I'll end. In conclusion, the objections to the finance bill revolve around concerns of inclusiveness, equity, and effectiveness. The bill aims to maintain fiscal prudence and promote investment. It falls short in addressing the needs of the middle class, supporting vulnerable populations, and ensuring balanced regional development. The challenge lies in striking a balance between growth, stability, and social justice, ensuring that economic progress is both sustainable and inclusive. Sir, since this is a finance bill, government has to raise money anyway. We have not given amendments. But I say that the finance minister has failed us, disappointed us in being blind to the real problems facing the country. Thank you. With that, I end my speech. Tirushri Arun Nehruji. Thank you, Speaker Sir. I rise to talk about the finance bill that was being presented recently, sir. Sir, I would want to start with addressing the inequality in the system, sir. Inequality that the budget and the finance bill has presented to this country. Now, the provincial numbers for the tax collection, the personal income tax is about 12.35 lakh crores, sir. And the corporate income tax is about 9.68 lakh crores, sir. You understand the inequality here, that the companies who are able to do business and pay taxes are paying less tax
than the common man here. So I want to understand the very ideological basis of where Viksit Bharat is heading. And where is the socially progressive nature that our Honorable Prime Minister has been espousing, in the speeches in his government? So I would want to know the stand through you, sir. Now, about 10.7 lakh companies file tax returns, sir. And the tax collection data shows that about 0.3% of the companies actually pay 67% of the tax, sir. 0.3% out of the 10 lakh companies. And about 56% pay no tax. I'm here pointing out that it's not about no tax versus tax, but actually the burden being shared across the pyramid. And the reason why I'm saying that is that because these companies, these small companies, are not being given enough opportunity to grow and actually pay taxes. I'm not, trying to tell that they're not paying taxes, but the opportunity loss is actually a lot larger. And these very rich companies are, paying tax, and it's creating a very unequal society and an opportunity loss here. Now, the litigation, the faceless assessment that the government has brought in the last 3 years, just give a status update. 5,39,863 cases are pending as on today, sir. And the amount that is being locked up is around 18.16 lakh crores. And our budget is 52 lakh crores, sir. You just see the amount of money that is being locked up in litigation is this. And I also wanted to point out that 27% of all litigation of the central government is only with finance, sir. And you see that we are in a lacuna here. On one side, we want to collect taxes. On the other side, we have 27% of litigation, which is being conducted by the finance department. Now, let's just put it into an opportunity cost, sir. You take 7% of 18.16 lakh crore. It is approximately 1.27 lakh crore. And to maintain this 1.27 lakh crore, the government spends up to 50 crore of litigation cost per year for the finance department. Now, if you do a opportunity loss ratio analysis for us, so for every 1 rupee that the government spends in protecting that investment or the demand for 18.16 lakh crore, it is 1.27 lakh crore that the private investors or customers have to bear year after year, sir. It's not 1 year. So the impact of 1 rupee that the government is spending on litigation is 2,500 times onto the economy, sir. So the finance bill doesn't address this particular inequality. Now the vacancy is about 36%. Or in the tax department, sir, of direct taxes. Now, I also want to point out, since sir is here, Jaishankar sir is here, he's also from my place, Trichy. Madam is also from Trichy. I will also be very happy if they start the recruitment from Mussoorie and Trichy constituency, sir. We will offer the biggest job mela and the candidates so that they can fill the 36% and do better collection, sir. Now, I'll also want to point out this direct tax is actually costly to comply, sir. These numbers tell you that it is very costly to comply, and it's very cost efficient to have alternate avenues. The government intention to collect tax is actually being defeated because of this convoluted idea of direct taxes in this finance bill. Let's move on to GST, sir. Everybody's favorite topic here, GST. We want to know what GST is because it impacts our everyday, life and items. Now, the government went ahead with a rate cut, assuming that it is going to give a buoyancy to the economy, expecting that the money is going to come back, in rotation and to help, the economy grow. Now, RBI's consumer confidence survey actually said no expenditure buoyancy after the tax cut of GST. You know why, sir? It is not because tax cut was effective. It was effective. But the government assumption that the money is going to come back into spending did not happen because our citizens thought that there is a lot of uncertainty ahead of time. So the buoyancy didn't happen, and the share of wallet, the money that was being rotated, actually decreased from 58% to 54%, sir. So the impact of Madam's choice to reduce the GST is actually not helping us here also. And this GST reduction has actually impacted states' revenues also, because states, take revenue from GST collection. And this unilateral decision to take GST and not to compensate states is actually hurting them economically also. Because most of the work of the people is actually being done by the state government, where the money, certain amount of money, saved about 34% approximately, comes from the central government for Tamil Nadu, sir. Now, there's also this inverted duty structure issue, where specifically for agriculture, the tractor machineries are at 18% today, sir. Whereas the finished goods is at 5%. So the farmer has to actually bear more taxes and not be able to pass that benefit to the customer. So this budget has something called as new scheme, sir. They had allocated up to 1 lakh crore
asking this parliament to pass that bill for new schemes. The parliament has not been told of what schemes. Of course, it might be a contingency fund, but it can be told as a contingency fund. The parliament has approved close to 1 lakh crore for new schemes. So through you, sir, I want to ask Madam to give us more clarity on what those funds will be spent for. Now, debt, sir. Now, debt, about 56% of our GDP is debt. Now, I mean, it's okay to have debt as long as the economy is growing, as long as you're able to service debt, as long as the tax collection is increasing. We're all for, sustainable debt. But I also want to point out that certain, areas of the budget, such as the railways, are taking indirect debt in lieu of leases. You see, close to 25% of railways budget has been allocated for lease servicing. So rather than taking debt upfront, they're going to take lease, which is going to provide for future cash flow problems. So I want this House's attention to come that lease is another form of debt which is actually not shown in books, sir. It is not good for the growth. Now, I also want to point out every state has been fixed a limit for borrowing. It's a good thing because you don't want, undue borrowing which can hurt finances. Now, this House has passed a fiscal responsibility bill, sir, FRBM bill, which is being passed about 5 years ago, and still the union government is failing to follow, but is asking states to follow a fiscal discipline. So I think the union government has no locus standi if they don't follow the FRBM bill. And through you, sir, I want them to follow the FRBM bill so that more money is passed to the states and we can still do a better job. Now, FTAs, the government has been going on about FTAs, free trade agreements. I also want the House to know what is the status of the free trade agreements. We must know if the free trade agreements, helps us in terms of giving us the revenues, investments, job opportunities, assets. Now, India's trade volume has increased, but you also should note, so has the trade deficit, the amount that we have to, pay others for the FTA. So I would point out 4 FTAs, sir. The ASEAN Treaty, which was in 2010, had a trade deficit of 35 billion as on today, sir. The UAE, which was signed in 2022, has a trade deficit of $26.7 billion. The Japan in 2011 has a trade deficit of 10.8. South Korea in 2010 is a trade deficit of 14.72 billion. Now, trade deficit is an ongoing account, sir. You can keep, rolling on the account to the next year, and we must ensure that our balance is better than to pay us. So what this has helped us, what this FTA has helped us is to increase the trade, but it has also increased our debt levels vis-a-vis the dollar amount. And that's why you see the pressure on the rupee year after year. Now, what this tells us is the contributing states, the southern states, I would take TN, for example, Tamil Nadu, for example, as not only has to work for the union government, but to Vietnam and China also because of this trade deficit. So we have to pay for the dollar and work here in India. Now, out of all this, the free trade agreement has led us to a point where the rupee is actually working for the dollar, not the other way around. So we're actually working for the dollar to increase and our rupee is actually being continuously devalued. Now, another favorite topic of the treasury benches, the PLI. You have, let me take a specific production link incentive schemes on electronics. Now, government wanted to do electronics. It has its own reasons, sir, because they don't want to be, they want to be geopolitically independent of our adversaries. It is a very good scheme, but the intent was good there. But what had happened is this: 10 companies, sir, was given an amount of 1.6 lakh crores, which is 50% of the capital expenditure, on producing these very focus areas called semiconductors and other electronic components which make us independent for defense and our ability to export. Now, the core material for all these electronics is polysilicon ingot. The polysilicon material that goes into all the electronic chips. 100% of the polysilicon ingots is actually imported from our adversary country today, sir. So 1.6 lakh crore has actually made us into a huge labor shop. We have not increased our capability to be independent of our adversary. We have not, developed our capability to export, and we have not developed our capability to attract more dollars. Very good so suggestion. This incentive that is given has actually made us into a labor shop. We are not even adding value to the total semiconductor ecosystem. So we are actually shortchanged. I don't know for what intention they have done it, but what has led us is to a place where in a very difficult spot, and our adversary holds our fully polysilicon ingot. That being said, polysilicon ingot can be done in this country, sir. Our country has got enough capabilities. So just not only either top level, you can work from the bottom level also.
our states, especially TN and the southern states, will be happy to help you also. I would want the House to note that this is a very critical juncture where the government should be made aware of. Also, AI models, sir. I mean, everybody is impacted by AI today, and India is the largest provider of data for these AI models. We have developed an ecosystem where the government has come up with schemes to attract AI, data centers, where we give the basics, the electricity, the water, the land, and the basic. And what we get back for us, they assume it's labor, but it's not labor. Our data, which these models use, is actually going free of cost, and we are taking our own grid. Our grid is not even 110%. It's actually much lesser. So the electricity that has to go for other productive uses and other productive labor is actually moved to a data center, and we pay those data center models with our electricity and the subscription cost, which most of the members are paying. So this imbalance needs to be corrected very soon, and our share of our work through data must also be, I think, it must be cashed out, sir. Now R&D also. So India's R&D is about 0.6%, sir. And today, without R&D, we can't innovate, we can't move forward. So this House must also note that R&D budget of Israel, a smaller country, is up to, is above 2%. So this government should take attention to increase the R&D and actually follow certain models which Tamil Nadu has excelled at. We'll be happy to, share it with the central government in terms of manufacturing, where it can give jobs and also innovate. Now, state share of revenue, sir. Now, this Honorable Niti Ayog has given us up to 41% of devolution of central funds. The cess amount has increased from 7% 10 years ago to 10%. And the cess amount goes only to the central government, sir. I have told this before also. What this cess amount does is to actually reduce the devolution to 41%, and effectively, Tamil Nadu as a state is only getting 34% of the central government, because 34% of the centrally sponsored schemes rather than the full amount of 41%. Sir, very important, in fact, one of the suggestions that we want to make is, for the GST revolution that happens, I request the central government through you, sir, to make an automatic deposit into state's account, rather than just taking 1 month, tallying the accounts, waiting for the salaries, moving into the account. He's actually given us 45 days. It's not only for me, sir. All the, treasury rule states also are facing this problem. So through the state's eyes, it is much easier if the cash flow is coming up front. I want to request, this mechanism through you, sir. Now, certain members have apprehensions about free schemes. They call it free schemes, but I will tell you why it's not free schemes. It's a schemes that empower women, specifically in Tamil Nadu's case. I want to present Tamil Nadu's case not to showcase that we're doing really well, which we are, but I want to showcase so that other states can actually learn from us and actually improve the national average. Now, women-centric schemes. There's the bus transport scheme for women, sir, which actually helps women in the domestic area to move around here without any cost. There's also the scheme for students, girl students and boy students to get into college. There's 1,000 rupee scheme. There's also a laptop scheme that's given. There's always the non-Mudalvan scheme, which actually enables students to go into competitive exams in the country and serve the public. And there's also the scheme where all government school students who have passed NEET, in spite of the inequality, are being given full fees from the government. I'm saying all this to note that the parliament can also learn from this, but I would also want to share the outcome. What is the outcome? What does the scheme do? Rather than, people think on the top line is actually reducing and, a lot of schemes go. The outcomes are this, sir, that the regional banks all over the country, Tamil Nadu's regional rural banks have the lowest NPA, sir, because this money goes into serving the agriculture loan and student loans, and they're able to keep the RRBs, NPAs in check. There's a drastic reduction in high interest rate, usury cases. If you see the last 5 years, there's decrease in the usury cases, and hence domestic participation in governance has also increased. Now, there's also a higher than 40% female participation, labor participation rates, are highest in the country, even in labor. So you can assume that, they have got the schemes from the government and they can stay idle at home. No. They are actually contributing to the economy because their problems are being sorted out from the government. They are contributing to the government's growth. Now, GDP growth, which is announced by the central government, Tamil Nadu is what, at 11%. We're still doing faster, 11.3% in fact. And then Mandrega, again a favorite topic of the people here. I would just want to point only one data point, sir. In Tamil Nadu, Mandrega, for every 100 rupees, the RBI, through the NSSO, has said that the social return on investment
is for every 100 rupees that is being spent by the central government, it gives back 148 rupees in terms of labor savings, in terms of asset creation, and in terms of social equality also. So I want the House to note that Manrega is actually creating wealth, and you can follow Tamil Nadu's model in terms of creating this SROI, sir. Sir, I'm finishing, sir. Only 2 more minutes, sir. Now, the point is, the GDP data has 3 classifications, sir, of data measurement. There's a primary, which is agri and mining. The secondary, which is construction and manufacturing, and there's tertiary, which is trade and finance. Now, the value addition, for 1 rupee of value addition that the farmer does, he gets about 18%, sir. And the manufacturing gets about 25%. The trade, tertiary, gets 56%, sir. And the government spends maximum on the 18%. You understand that the government's ROI on spending on the primary infrastructure is only at 18%, but the maximum value is taken by somebody else. So I want the government's attention to happen that the balance on where you're allocating the budget needs to be readdressed so that farmer gets more money and your return on investment is also good enough. Now, I also want to conclude, sir, is that in Tamil culture, sir will also join me, in Tamil culture, sir, Tamil culture has never been one from the outside, sir. In fact, those who ever co-opted with Tamil Nadu has actually grown with Tamil Nadu in terms of historical places. So I'll also want to tell the union government that you co-opt with us, you work with us, we will contribute more than you can imagine for the government's growth, sir. And I also want to finish with this, for the nation's growth, sir. Tamil Nadu போராடும், Tamil Nadu வெல்லும். நன்றி, வணக்கம். நன்றி. Very good, Arun. Excellent. माननीय श्री सुनील कुमार जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किए गए 2026-27 के आम बजट एवं वित्त संबंधी उल्लेखनीय विषयों को, जो कि देश की वर्तमान जरूरत है, के समर्थन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस अवसर हेतु सदन का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को वर्ष 2026-27 का एक दूरदर्शी, समावेशी और विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। भारत सरकार ने आम बजट में देश के कल्याण हेतु कई सराहनीय कदम उठाए हैं, जो आर्थिक सुधारों की दिशा में काफ़ी उल्लेखनीय है। केंद्रीय बजट 2026-27 कुल व्यय 53.55 लाख करोड़ का मुख्य फोकस बुनियादी ढांचे, A1 टूल्स और रोजगार सृजन पर फोकस करता है। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। कृषि के क्षेत्र में भारत विस्तार A1 टूल के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने और जोखिम कम करने पर जोर दिया गया है। रक्षा के क्षेत्र में पेंशन में 6.56% की वृद्धि और पूर्व सैनिकों के लिए ECHS को 12,100 करोड़ का आवंटन किया गया है। विनिर्माण और ऊर्जा की बात करें तो लिथियम आयन, सोलर ग्लास और नागरिक विमानन घटकों पर सीमा शुल्क BCD में छूट दिया गया है। यह बजट ग्रामीण, गरीब, युवा, महिला, किसान कल्याण को प्राथमिकता देता है। आधारभूत संरचनाओं की मजबूती के साथ देश रेल सेवाओं, सड़कों के देशव्यापी नेटवर्क, ऊर्जा क्षेत्र, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, डिजिटल भारत, MSME, लघु उद्योग और सौर ऊर्जा पर अभूतपूर्व कार्य कर रहा है। यह आम बजट सर्वस्पर्शी, समावेशी और संतुलित बजट है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की सामाजिक समभाव की दृष्टि निहित है। उक्त विषय के समर्थन के साथ सदन के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देते हुए अपने लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं को सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। प्रत्येक वर्ष नेपाल की पहाड़ी नदियों का भीषण बाढ़ से यहाँ जान माल और लाखों की संपत्ति का भारी नुकसान होता है। गंडक नदी के कटाव से बगहा वासियों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होता है। बाढ़ से हर साल न केवल फसलों की बर्बादी होती है, बल्कि हजारों लोगों के घर उजड़ जाते हैं। बाढ़ नियंत्रण और गंडक के कटाव अवरोध के कार्यों को हर वर्ष सरकार का करोड़ों रुपया खर्च होता है। अगर वाल्मीकि नगर गंडक बराज से चकनी, रजवटिया, बगहा प्रखंड 1 तक पक्का गाइड बांध बन जाए तो गंडक नदी की बाढ़ से अस्थायी निजात मिलेगा। इसके लिए वित्त संबंधी समस्याओं का निराकरण हो। वर्षों पूर्व 9 जनवरी 2023 को वाल्मीकि नगर में लैंड कस्टम स्टेशन का उद्घाटन किया गया, लेकिन अभी भी यह सुचारू रूप से चालू नहीं हो सका है। भंसार कार्यालय के न होने से भारत नेपाल सीमा पर व्यापारी
बंधुओं को काफ़ी कठिनाइयां आ रही है। इस पर भी ध्यान दिया जाए ताकि सुचारू रूप से चल सके। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के निम्नलिखित स्थानों पर बैंक की मांग जो है इस प्रकार है: मधुबनी, पिपरासी, भीतहा, ठकराहा प्रखंड के साथ साथ नरकटियाज के मथुरा प्रखंड, बघा 1 के भैरवगंज, इंग्लिसिया, सेमरा, नौतन के पकड़िया, कर्पूरी चौक के नज़दीक और गौनहा, पिपरा चौक, मझरिया आदि पर राष्ट्रीयकृत बैंक के शाखा खोलने की मांग बहुत दिनों से चली आ रही है। इस पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए प्राथमिकता के साथ खोलना चाहिए। मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NS 727 पर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में मंगलपुर SSB कैंप के मदनपुर पनियावा हिस्से के वैकल्पिक मार्ग के रूप में VTR के बाहर प्रस्तावित बगहा के शास्त्री नगर बेलवनिया पुल सड़क मार्ग के प्रस्ताव पर वित्त संबंधी बाधाओं को दूर करते हुए इसका कार्य कराया जाना चाहिए। वाल्मीकि नगर में एयरपोर्ट के निर्माण के लिए शीघ्र अतिरिक्त राशि आवंटित हो ताकि यह जल्द ऑपरेशन हो सके। वाल्मीकि नगर में प्रस्तावित तारामंडल निर्माण के लिए शीघ्र टेंडर और राशि का आवंटन हो। मेरा लोकसभा क्षेत्र तीनों सर्किट जैसे रामायण सर्किट, वाल्मीकि आश्रम, गांधी सर्किट, भिथियारवा आश्रम, बौद्ध सर्किट, अशोक स्तंभ, रामपुरवा स्तंभ जो गिरने के बाद इसका एक स्तंभ शीर्ष बिशप जो माननीय राष्ट्रपति जी के मुख्य द्वार पर सुरक्षित है और दूसरा स्तंभ का दूसरा सिंह जो कोलकाता विक्टोरिया म्यूजियम में सुरक्षित है, नंदनगढ़ चाणकीगढ़ विद्यमान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि वाल्मीकि आश्रम, भिथियारवा आश्रम, अशोक स्तंभ, रामपुरवा स्तंभ और नंदनगढ़ चाणकीगढ़ जो हमारे पुरातन धरोहर है, इसकी बृहत अध्ययन पुरातत्व विभाग, कला संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग, वन और पर्यावरण विभाग की संयुक्त अध्ययन टीम बनाकर कराई जाए और इसका पर्यटकीय विस्तार सौंदर्यीकरण कराई जाए, जिससे वाल्मीकि नगर एक अच्छा पर्यटक क्षेत्र बन सके। जो वाल्मीकि नगर बिहार का कश्मीर भी कहा जाता है, जिससे वाल्मीकि नगर के सौंदर्यता, सौम्यता, पुरातन इतिहास जो यहाँ विद्यमान है उसको विकसित करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी से अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने की मांग करता हूँ। और अंत में मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और वित्त मंत्री सीतारमण जी का धन्यवाद अर्पित करता हूं, जिनके चलते सुपर कुशल नेतृत्व में जो है देश आगे बढ़ रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री अनिल देसाई जी। Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, the Finance Bill 2026 is a comprehensive budget presented by FM Srimati Nirmala Sitharaman ji, outlining the key policies and initiatives for the fiscal year 26-27. The bill mainly focuses on promoting economic growth, simplifying taxes, and enhancing infrastructure development. Sir, as far as tax reforms are concerned, while introducing new Income Tax Act, simplification of tax structures, though a welcome step, it is yet to be understood by the middle class taxpayers at large. Reduction in corporate tax, especially MAT, that is minimum alternative tax, the reduction which is given has made to an extent corporates a happy entity. But as far as middle class is concerned, there is nothing much has come to their way as a sort of relief. On the contrary, STT, that is Security Transaction Tax, brought in the budget has already adversely affected the middle class in their activities as far as the capital market is concerned. Another strange thing is that medical insurance premium, when we speak about the health, medical insurance premium for the senior citizens or retired employees. Are you asking me, sir? He alone. Full time to him. No, please continue, sir. Please continue. Medical insurance premium, which really is a great help for the senior citizens of our country and even retired employees all over, be it from the corporates or the government sector. The level at which it is been hiked, the premium, it has become absolutely unaffordable for the citizens, senior citizens and retired people to go for the mediclaim policies, and that is affecting their health. I would request Honorable FM to look into this and advise accordingly, instruct government insurance companies to see that reconsideration for the premium be taken up.
Another this thing is infrastructure development. Now huge outlay of 12.2 crores for capital expenditure focusing on basically roads, railways and urban development. The objective of this government for this huge outlay crores is to reduce logistics costs and strengthen domestic manufacturing. The thrust for Tier 2 and Tier 3 cities to be developed on the lines of metro cities. Also, temple towns have been included in that. Emerging economic regions have been prioritized for development in this budget. The aim of the government is no doubt genuine, but the reality on the ground is far from the picture what is wrong. Today, the metro cities face too many issues in providing basic amenities like water, good roads, even electricity, and problems of clean air. That is the pollution what we are fighting for. Ever-increasing population of metros as people from rural and or semi-urban areas rush to metro cities in search of job and a house to live. Unemployment is rising by the day, and rise in inflation due to war escalation in West Asia. In time to come, we'll see that this is a serious issue in every household across the states. Manufacturing boost has been provided by way of initiatives for electronics, textiles and biopharma sectors. Now, Biopharma Shakti, rupees 10,000 crore initiative over 5 years to position India as a global pharma hub. The program aims to develop India as a global pharma manufacturing hub by building an ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars, thereby reducing import dependence on the complex biologic medicines. The initiative is expected to boost India's biopharma sector, promote innovation, and improve access to affordable health care.